the same are not admitted. Matters raised with permission. Mani Sri Bikramjit Singh Sahni. Mani Bikramjit Singh Sahni. Please, not allowed. I have already cleared. मैंने स्पष्ट कर दिया. माननीय संजय सिंह, माननीय प्रमोद जी, please take your seat. No. माननीय श्री बिक्रमजीत सिंह साहनी, माननीय बिक्रमजीत सिंह साहनी. Concern over students facing difficulties in their job placement. माननीय बिक्रमजीत सिंह साहनी, speak on the subject, please. कारण ऑलरेडी बता दिया है माननीय चेयरमैन के डायरेक्टिव को. प्लीज आप बोले. माननीय बिक्रमजीत साहनी, आप बोले, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी. आप बोले, अदरवाइज मैं दूसरे को बुलाऊंगा फिर. प्लीज सर. यस, नथिंग इज गोइंग ऑन ग्राउंड. प्रमोद जी, माननीय बिक्रमजीत सिंह साहनी, प्लीज. Honorable Chairman, sir. Please. IITs and NITs are the most prestigious institutions of the country, and I would like to extend my gratitude to the Honorable Finance Minister for adding 6,500 more seats in IITs in the budget. But unfortunately, sir, it is a hard reality that last year out of the about 38% IITs remain unplaced. As per the International Labour Organization report in India, educated unemployment was 65.7%. These numbers are really worrisome. Additionally, 83% of the total unemployed people in India are young individuals. Chairman, sir, over 30 lakh posts are vacant across central and state departments of the country. And we all know that last year over 1 lakh youth applied for sweepers post in Haryana. Same way in UP, last year for 411 primary teacher vacancies, over 10 lakh youth had applied. While if we speak about the private sector, the Indian IT sector, once a major job creator, has seen a 40% decline in the new hiring in 2024. While self-employment and entrepreneurship are critical solutions, there remains a huge gap between the policies on paper and actual delivery on ground. Schemes like PM Mudra Yojana and Startup India, designed to provide collateral-free loans, are often inaccessible due to stringent bank conditions, and the youth don't get these loans without giving collateral. Even, sir, it's unfortunate to note that 83% of the loans given in Mudra scheme were less than 50,000 rupees. I want to request this House that is it possible to start a startup or dignified venture with 50,000 rupees. Moreover, even education loans meant to empower youth require heavy collateral guarantees, making higher education a challenge for many aspirants. Even after spending about 60 to 70 lakh rupees are per the estimate, from KG to PG, a youth does not get employment, with lot of unemployment, underemployment. Then adding to this, the rise of AI and automation poses a great threat. Studies predict that by 2040, nearly 70% of the jobs in India's IT and service sector could be automated, displacing millions of the workers. To address this, we must focus on revitalizing MSMEs, further boosting manufacturing under Make in India, create academic industrial linkages, enhancing vocational education from KG to PG. I will request the Leader of the House, Nadda ji, to allow discussion, and the Honorable Chairman how to generate employment and may consider. धन्यवाद माननीय बिक्रमजीत सिंह जी. धन्यवाद. माननीय श्री ब्रिजलाल जी, concern over extinction of vultures and its negative impact on the environment. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मैं प्लीज आप बोलो. उपसभापति महोदय, प्लीज टेक. मैं गिद्ध जैसे पक्षी पर्यावरण के लिए प्राकृतिक सफाई कर्मी होते हैं और यह इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है. हमने देखा है बचपन में आसमान में ग्लाइड करते हुए गिद्ध जब दिखाई पड़ते हैं तो लगता है कहीं कोई जानवर का शव पड़ा है, और उसके इनकी गिद्ध दृष्टि इतनी तेज होती थी कि वहाँ पर जाकर के उसकी सफाई कर देते थे, और हमारे पर्यावरण के संतुलन में ये इनका बहुत बड़ा योगदान था. उपसभापति महोदय, गिद्धराज, जटायु, इन सब का जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है. रामायण काल में मिलता है. जटायु का जिक्र मिलता है जिन्होंने
माता सीता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया था। गिद्ध और जटायु का उसके अलावा जो पर्यावरण में योगदान रहा है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये ऐसा जीव है जो सड़े गले मांस को खाता है और कितनी भी भयानक बैक्टीरिया ना हो उसको पचा जाता है। लेकिन सभापति महोदय, जो इंसान ने उसके लिए डाइक्लोफेनाक बनाया उसको नहीं बचा पाए। जो जानवरों को दवा दी जाती है और जब वो जानवर उस दवा को खाते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो जब गिद्ध खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है और जब उनकी किडनी फेल होती है तो वो मर जाते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि ये हमारे जो पर्यावरण के प्राकृतिक हमारे सफाई कर्मी थे, इनका ख़त्म होना हम लोगों के लिए, मानव मात्र के लिए भी बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये गिद्ध ऐसे प्राणी हैं जो खा लेते हैं 100 को, लेकिन वही अगर प्राकृतिक रूप में पड़ा रहता है तो 4-5 गुना समय लेता है उसको डिकम्पोज होने में, ख़त्म होने में। और जहाँ गिद्ध नहीं है तो तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो फैलते हैं और उसमें तमाम बीमारियां फैलती हैं, मौतें होती हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इस पर रिसर्च किया, अमेरिकन एक जर्नल ने रिसर्च किया और ये पाया कि मानव मात्र के लिए बहुत खतरनाक है। इस भारत सरकार को मैं बधाई देता हूँ कि इन्होंने डाइक्लोफेनाक के जो है यूज जो होता था उसको बंद किया है, लेकिन इसके लिए एक समन्वित कार्यक्रम चलाना पड़ेगा क्योंकि गिद्ध की जो समाप्त होना ये हमारे लिए बहुत ही, पर्यावरण के लिए ही बहुत नुकसानदायक होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके संरक्षण के लिए हमें उपाय करने होंगे। गिद्ध से तो तमाम संस्कृति जुड़ी है। हमारे पारसी समाज के लोग टावर ऑफ साइलेंस पर अपनी डेड बॉडीज़ को रखते थे। आज भी ईरान में, अब तो वहाँ इस्लाम है, लेकिन आप वहाँ जो पर्यावरण आप जाएंगे पर्यटन के लिए तो वहाँ अब भी वहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस पहाड़ों पर मिलते हैं। धन्यवाद। माननीय श्री सुभाषिष खूंटिया जी, डिमांड टू एक्सपेडाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओवर ब्रिज नियर सिद्धा महावीर इन पुरी, ओडिशा। जय जगन्नाथ। Honorable Deputy Chairman sir, I raise to draw the attention of the August House to the prolonged delay in the construction of the overbridge near Siddha Mahavir Puri, which has caused severe inconvenience to the commuters and disrupted connectivity in the region. This matter requires urgent government intervention. Sir, Puri is a globally renowned as the abode of Lord Sri Jagannath, a sacred pilgrim site and the prominent international tourism destination. Lakhs of devotees and tourists visit Puri and nearby attractions such as the UNESCO World Heritage Site Konark Sun Temple. The Puri-Konark Marine Drive Road passing through Siddha Mahavir is a critical route for these visitors. However, the bridge construction along this road has been progressing at a sluggish pace. The excavation of bridge pillars has significantly narrowed the road, leading to severe traffic bottleneck and causing untold hardship to commuters and the local residents. Through you, sir, I seek a response from the Honorable Minister, Road and Transport and Highways on the steps being taken to expedite this critical infrastructure project. I also request an update on the timeline for its completion and urge the government to implement interim measures to address the difficulties faced by the public, such as improving traffic management and providing alternative routes. Sir, the road is the lifeline of Puri, supporting not only the mobility of its residents, but also region's tourism-driven economy. Any further delay would exacerbate the socio-economic impact. I propose that the government establish a monitoring mechanism to oversee the timeline execution of such projects to prevent similar delays in future. I trust that the minister will prioritize the matter and take swift remedial action. Jai Jagannath, Bande Utkal Janani. धन्यवाद माननीय सुभाषिष जी। माननीय श्रीमती धर्मशिला गुप्ता, डिमांड टू इंक्रीज फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मेरे क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण लोकहित के मुद्दे को संसद पटल पर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की है।
माननीय उपसभापति महोदय, मेरे बिहार राज्य के दरभंगा जिले में स्थित एयरपोर्ट पर पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से कई राज्यों के लिए फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है, परंतु वहां के स्थानीय निवासियों की डिमांड है कि दरभंगा से दिल्ली हेतु मात्र 2 फ्लाइट्स का संचालन प्रतिदिन होता है और उसमें भी सामान्यतः सर्दियों के समय में संचालन लगभग बाधित ही रहती है। हालात यह है कि पिछले 10 दिनों के दौरान बमुश्किल से 2 से 3 दिन ही फ्लाइट्स का संचालन हो चुका है, जबकि यह स्थिति हर वर्ष सर्दियों के समय बनी रहती है, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से आग्रह करना चाहती हूँ कि दरभंगा दिल्ली के लिए फ़्लाइट्स की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, साथ ही फ़्लाइट्स कैंसिलेशन की समस्या को दूर करने हेतु दरभंगा एयरपोर्ट पर ILS अर्थात इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को जल्द से जल्द चालू किया जाए, जिससे कि इसकी मदद से रेडियो संकेतों के संयोजन से खराब मौसम में भी फ्लाइट्स को आसानी से लैंड कराया जा सके, ताकि क्षेत्र की जनता को निरंतर कैंसिल होते फ्लाइट से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं नुकसान उठाना पड़ रहा है। महोदय, मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर जल्द से जल्द ILS की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाए तो इससे लोग लाभान्वित होंगे और उनके समय की भी बचत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मशिला जी। माननीय श्रीमती ममता ठाकुर जी, डिमांड टू डिक्लेयर गंगा सागर मेला इन बंगाल एज नेशनल फेयर। बंगला में आप बोलें। हाँ जी डेप्यूटी চেয়ারম্যান স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে জিরো আওয়ারে বলতে দেওয়ার জন্য। গঙ্গাসাগর মেলা হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক এবং মানব ধর্মসভাগুলির মধ্যে একটি। আকারে এটির স্থান শুধুমাত্র কুম্ভ মেলার পরে, কিন্তু কম উল্লেখযোগ্য নয়। গঙ্গাসাগর মেলা প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু কুম্ভ মেলা প্রতি 4 বছরে এবং একটি স্থানে 12 বছরে অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাসাগর মেলার প্রাচীনত্ব ইতিহাসে উল্লেখ আছে, যখন ভারত মহাসাগরের মাধ্যমে পূর্ব ভারতীয় বাণিজ্যকে প্রাচীন গ্রিক রোমান বাণিজ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এটি সেই সময়কালের। গঙ্গাসাগর মেলা হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জন্য বিশ্বাসের একটি মাইল ফলক। এর গভীরতা, জ্যোতিষ এবং পৌরাণিক তাৎপর্য রয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং কালিদাসের রঘুবংশমের মতো প্রাচীন ধর্মীয় মহাকাব্যগুলিতে এই মেলা কপিলমুনি এবং সাগর দ্বীপের উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং সারা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রতি বছর মেলার সময় পবিত্র ডুব দিতে আসেন। এই বছর 1 কোটিরও বেশি ভক্ত এই মেলায় পরিদর্শন করেছেন এবং সংখ্যাটি কেবল বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলা রাজ্য সরকার সমস্ত তীর্থযাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ এবং বাসস্থান এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক উদ্যোগ নিয়েছে। ভারত সরকারের কোনো অবদান ছাড়াই সমগ্র খরচ রাজ্য সরকার বহন করে। গঙ্গাসাগর মেলার স্বতন্ত্র এবং তাৎপর্য, ব্যাপকতা এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা বিবেচনা করে আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব যে এটিকে একটি জাতীয় মেলায় মর্যাদা দেওয়ার জন্য। কুম্ভ মেলার ঘটনায় গঙ্গাসাগরের ঘটলে এতক্ষণে বাংলায় কেন্দ্র থেকে একাধিক টিম পৌঁছে যেত এবং হয়েই পড়ে যেত। ধন্যবাদ। धन्यवाद ममता जी। माननीय श्री घनश्याम तिवारी जी, डिमांड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अकरिंग ऑन नेशनल हाईवेज। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका एक विशेष घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पिछले 20 दिसंबर को जयपुर के बांकरोटा इलाके में एक गैस टैंकर के सड़क पर चलते हुए आग लग जाने से उसके पीछे आने वाली बस में जितने लोग बैठे थे वो भी जल गए और रास्ते में करते लोग चले गए और 40 लोगों को अपना जीवन जलकर समाप्त हो गया। 40 गाड़ियाँ भी जल गई और बहुत नुकसान हुआ। और वो नुकसान का कारण एक ही था कि नेशनल हाईवे नंबर 8 जो दिल्ली से जयपुर होकर अजमेर तक जाता है, जयपुर से अजमेर के मार्ग में बांकरोटा में एक पुलिया जो फ्लाईओवर बनना था वो बहुत लंबे साल से पेंडिंग है और वहाँ 3 तरफ से
ट्रैफिक आकर मिलता है और 3-4 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। वहाँ ये टैंकर आया और इधर से यू टर्न पर आने वाले दूसरी गाड़ी से टकराया और उसके साथ चलने वाले बहुत से वाहन एक साथ जलकर हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या वहाँ पर है और इसके कारण बहुत से एक्सीडेंट हो गए। उपसभापति महोदय, केवल उस एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में राजमार्गों पर और सब मिलाकर देश में 7,77,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं से मारे गए हैं। मरने के साथ साथ ही जो विकलांग हो जाते हैं वो उनकी जीवन भर की समस्या रहती है। तो इस सब मामलों को देखते हुए और हर साल इस पर बढ़ जाते हैं, अनअभिप्रेत जो मृत्यु हैं, अनजाने में जो मृत्युआं होती है देश में, उसमें 43.7% मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं कारण से होती है और 10 बड़े कारण जो मृत्यु के हिंदुस्तान में इस समय है उसमें सड़क दुर्घटनाएं भी एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में कहा भी कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण से देश की छवि खराब है। तो मैं इन सब घटनाओं को ध्यान रखते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो जो ऑयल और ये टैंकर लेने जाकर जितने भी जाते हैं वाहन, उनके चालक अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित हों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रख कर के दूसरे वाहन उनसे सुरक्षित रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ट्रैफिक को डाइवर्जन के बारे में और फ्लाईओवर के बारे में तुरंत कदम उठाकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ताकि इन सब घटनाओं से बचा जा सके। और इन घटनाओं के कारण जोशकर में विशेष रूप से जयपुर में जो बागरोटा में इस प्रकार की घटनाएं बार बार लगातार हो रही है, मैं आग्रह करूंगा NHA से कि जो ठेकेदार इसको विलंब करने के लिए जिम्मेदार हैं और जो कंपनी इसको विलंब करने के लिए जिम्मेदार है, उनको उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई करके जो मृत हैं उनके परिवारों को सरकार के अलावा उनसे भी मुआवजा दिलाया जाना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय घनश्याम तिवारी जी। डॉक्टर शिव कुमार मित्तल जी, नीड फॉर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स टू इंश्योर फेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी। धन्यवाद महोदय। सर, हमारे देश में इंश्योरेंस एक छतरी की तरह है जो बारिश के समय आपको बचाता है, कड़कती धूप में आपको बचाता है, लेकिन जब हम देखते हैं तो सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या मेडिकल इंश्योरेंस की सेटलमेंट, एक आम आदमी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं उनका क्लेम उनके हॉस्पिटल में जाने से पहले सेटल हो जाता है, जो कि हमने पिछले हफ्ते देखा। और गरीब आदमी का ना तो हेल्थ क्लेम सेटल होता और उसको बेचारे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं मिलता और कई बार तो लाश भी नहीं दी जाती कि पहले पैसा सेटल करो। सर, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में एक बहुत ही चिंताजनक मुद्दा है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी का। यदि आप ग्रेस पीरियड में अपना प्रीमियम नहीं दे पाए, किसी वजह से भी आपकी नौकरी चली गई, बिजनेस बंद हो गया, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है और आपको इंश्योरेंस कवर भी चला जाता है और जो निवेश, जो पैसा इन्वेस्ट किया है गरीब आदमी ने, वो भी चला जाता है और उसको डिसकंटिन्यूस फंड में डाल देते हैं। सर, थोड़े से आंकड़े LIC के 2021-22 में 35 करोड़ ऐसे जब्त हो गया, 22-23 में 97 करोड़ जब्त हो गया और 23-24 में 231 करोड़ आम आदमी का पैसा ऐसे इन इंश्योरेंस कंपनी ने जब्त कर लिया। ये तो एक तरीके का है। दूसरा, अनक्लेम्ड। LIC के आंकड़े बोलते हैं कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। IRDAI के अनुसार मार्च 24 में बीमा में 20,000 से ऊपर की राशि अनक्लेम्ड पड़ी हुई है और 3,70,000 से लोग पॉलिसी होल्डर्स अपना फंड वापस नहीं ले पा रहे हैं। और यदि दूसरी हम प्राइवेट कंपनियों को जोड़ें तो ये हजारों करोड़ में बन जाएगी, जो कि शायद हमारे कई मंत्रालयों के बजट से भी ज़्यादा होगी। मेरा निवेदन है सरकार से कि मेडिकल इंश्योरेंस सेटलमेंट में मेरिट के हिसाब से हो और एक फिक्स्ड टाइम में हो, ना कि व्यक्ति के सेलिब्रिटी स्टेटस के हिसाब से। साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में जो प्रीमियम को फोरफिट किया जा लेता है, जब्त कर लिया जाता है, उससे संबंधित जो भी रेगुलेशंस है उनको चेंज किया जाए, बदला जाए
और जो प्रीमियम दिया है एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत की कमाई से कम उसको वो तो वापस किया जाए, बोनस ना भी दिया जाए, कम से कम प्रीमियम तो वापस किया जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इन दोनों पर, मेडिकल क्लेम सेटलमेंट पर और लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम पर फैसला जल्दी लेगी और पूरे देश को एक बड़ी राहत देगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, डिमांड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल हॉलीडे ऑन द बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ भगवान ऋषभ देव एंड भगवान महावीर जी। Thank you, Deputy Chairman sir, for giving this opportunity to raise the issue on the most sentimental and emotive issue pertaining to not only to the Jain community but the entire the peace lovers of this country. जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषदेव था, भगवान ऋषदेव था। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषदेव अष्टपद पर्वत माने कैलाश पर्वत से मोक्ष की प्राप्त की थी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 5 का जन्म पवित्र अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म आखिरी 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर जी का था। तीर्थंकर जो होते हैं जो संसार और सागर जन्म मरण के चक्र से मोक्ष तक मार्ग का वो दिखाते हैं। तीर्थंकर कर्मों से मुक्त होकर केवल ज्ञान की प्राप्त करते हैं। ऐसे दो महानुभाव भगवान के रूप में जो भगवान ऋषभदेव जी और भगवान महावीर जी, these two exemplary and extraordinary figures not only shaped the ethical and spiritual landscape of not only Jainism but also the broader cultural fabric of our great nation. Bhagwan Rishabdev, the first Tirthankar, is widely regarded as the founding figure of Jain philosophy. His teachings, based on principles of non-violence, ahimsa or satya, meaning truth. Bhagwan Mahavir Ji, the 24th Tirthankar, further refined and deepened these integral to the path of spiritual enlightenment and peace. His life and teachings have cutting across the religious boundaries, offering universal values that are relevant to all the humanity. The Jain community for centuries has made immensible contribution to the growth and progress of India, whether in the field of business, trade, education, philanthropy and social welfare, and their efforts in promoting sustainability, charity and non-violence have played a vital role in shaping a harmonious and prosperous and inclusive society. And their immense service, particularly during the Corona period, we have seen how they have been dedicated to the society and the need of the society. So in recognition of these two profound spiritual contributions, Bhagwan Rushdevji Ji and Bhagwan Mahavir Ji, I urge upon the government to consider their birth anniversaries as a national holiday and declare national holiday and see that the sentiments of not only the Jain community, all the peace-loving of this community be protected. Thank you very much, sir. धन्यवाद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी। माननीय श्री देवाशीष सामंत राय, रिक्वेस्ट टू डिक्लेयर बाली यात्रा एज नेशनल फेस्टिवल। Thank you, sir. Come Kartik Purnima, and along the banks of Mahanadi, there are thousands of boats which are floated symbolically, remembering the 2000-year maritime glory of Odisha. This fair over the years has taken a very big proportion, and it has assumed a size where people have called it one of the biggest fairs in Asia. Over the period of 7 days, it has grown to a national festival in many ways, where you find national craftsmen, dance performances, weaving, and self-help groups and tribals participate and to sell their produce there in the market. Our Honorable ex-Chief Minister, my leader, Sri Naveen Patnaik, had declared it a state function and had requested the central government to accord it a national festival status. Bali Yatra finds a mention by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji when he visits Indonesia and recalls this festival in Odisha, which links for thousands of years
India to Southeast Asia in Indonesia. And this maritime travel was specifically to Bali, Sumatra, Java, Borneo, and Southeast Asia, Sri Lanka, also Malaysia. And this year, Government of India sent a delegation of excellencies from all the embassies to visit this fair. Therefore, as already it finds mention in Honorable Prime Minister's speech in Indonesia, I request you through the Culture Minister and the Tourism Minister to declare this festival a national festival. I'm sure if anyone amongst these colleagues of mine have visited Odisha at this particular time, they'll remember an age-old ancient tradition which is still practiced till now. Therefore, I thank you, and through you, I request the Culture and Tourism Minister to immediately accord a status of national festival. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय देवाशीष जी। माननीय सुश्री कविता पाटीदार, डिमांड टू ट्रांसफॉर्म द ड्रेनेज ऑफ रेलवे लाइन अंडर पासेज इन द कंट्री फॉर वाटर कंजर्वेशन। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। हम जानते हैं कि रेलवे लाइन में अंडरपास का निर्माण आमजन की सुविधा के लिए किया जाता है, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि वर्षा के दौरान बारिश के मौसम में अतिरिक्त जल भराव के कारण आमजन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसका उपयोग कठिन सा हो जाता है। मैं स्वयं कई बार दिल्ली में मिंटो ब्रिज पर इस समस्या से रूबरू हो चुकी हूँ। महोदय, मेरा एक ये सुझाव है कि अंडरपास में जो जल भराव है उस समस्या के निवारण के साथ जल संवर्धन को जोड़ देना चाहिए। फिर चाहे वो अंडरपास के जीरो लेवल से बड़ा पाइपलाइन बिछाकर पास में सोख्ता गड्ढा का निर्माण करके उस जल को भूमि में छोड़ने वाली बात हो, या पीट रिचार्जिंग के द्वारा वाटर रिचार्जिंग का माध्यम को चुनना हो। मेरा ये निवेदन है, हम सभी जानते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई अनुपम कार्य किए हैं, भारतीय रेलवे को आज शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया है। उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं, और साथ ही सरकार से ये अनुरोध करती हूं कि ऐसे अंडरपासेस जहां पर वर्षा के दिनों में बहुत ज़्यादा जल भराव होता है उसका समुचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, और उसके ठोस निवारण के जो उपाय है उसके साथ जल संवर्धन के कार्यों को जोड़ना चाहिए, ताकि एक पन दो काज हो सके, समस्या का निवारण भी हो सके और जल संवर्धन जैसे पुनित कार्य भी हम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री कविता पाटीदार जी। ऑनरेबल एस सेल्वागन वेथी, कंसर्न ओवर एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर। Honorable Deputy Chairman, sir, the global climate change has affected every walks of life, especially affecting agriculture in many ways. The effect on agriculture is a serious problem since it is affecting the food security of the people. Till recently, rainfall patterns have been uniform and predictable. Therefore, the farmers have been cultivating in a set pattern called Kharif Rabi seasons. But because of the erratic weather pattern caused by the climate change, the rainfall pattern has been completely changed. There are unseasonal downpours, unexpected dry periods. These have upset the crop growth. Crops have been abandoned by unexpected heavy downpours and floods, causing great loss to the farmers. Often, the government has to extend financial compensation to the farmers during such occasions. As a result, the food production declines and the government suffers financial loss. There is a danger that the grains of the Green Revolution may be lost. Warming can cause crops to develop faster, producing less grain. Higher temperatures can also make it harder for plants to get and use moisture. Research in the agriculture sector has advanced greatly in India. Now, there is a need for addressing the problems of the farmers suffering from the climate change disasters. In this connection, I have studied that there are rice varieties which grow for over 10 to 15 feet in height in Indonesia. Such varieties are available in the traditional rice collection of India also. I suggest that the agricultural institutes can examine the suitability of such
flood-tolerant varieties and enhance their genetic capacity through hybridization and release new high-yielding as well as flood-tolerant varieties to the farmers. Alternately, technical advice should be given to the agriculturists to change the cropping pattern suitably. The ill effects of El Niño and La Niña are more damaging than ever before. Climate change can also increase water use, since scarcity and also soil degradation. Therefore, I request necessary action shall be taken by the government to monitor the adverse impact of climate change on agriculture on war footing basis. Thank you. Thank you. Manya Srimati P.T. Usha ji, demand for establishment of AIMS at Kinnalur in Kozhikode, Kerala. Thank you, Deputy Chairman, sir. Let me take this opportunity to bring to your kind attention and utmost significant matter that will define the path of development of Kerala. My state, Kerala, requires an institution offering advanced healthcare infrastructure system that matches the aspirations of the state in providing comprehensive healthcare for all, as our country is rapidly progressing towards Amrit Kal era. Kerala's healthcare sector deserves an All India Institute of Medical Science to complement its existing advances made in healthcare sector. I feel that the responsibility bestowed upon me by being a member of Rajya Sabha must be optimally utilized by committing an AIMS facility at Kinnalur, Kerala. Kinnalur is the first choice of Kerala state government for the proposed All India Institute of Medical Science. The advantage of the location include a majority of the land is owned by the government, minimizing land acquisition process from private landowners, and increasing the scope of the future expansion of the AIMS Institute upon establishing. At present, about 200 acres of land is required for the project, and Kerala State Industrial Development Corporation handed over 153.46 acres of land. I have also given away 5 acres of land from my Usha School of Athletics for the proposed AIMS project. The State Revenue Department has decided to acquire about 100 acres of land from private people. Kinnalur, being located in the pivotal point of the Malabar region of Kerala, is easily accessible for patients from districts like Nilgiris, Coimbatore, Tamil Nadu state, and Mysore, Chamarajnagar, Kodagu, Karnataka state, and the entire Malabar region is connected to Kinnalur with 6 kilometers from the under construction Hill Highway, 23 kilometers from National Highway 66, 10 kilometers away from the Koilandi Tamarasheri Edavannapara State Highway, and 23 kilometers from Koilandi Railway Station, and 31 kilometers from Kozhikode Railway Station, and 53 kilometers from airport, both Kannur and Kozhikode. The climate, environment, and general ambience of Kinnalur is conducive for the patients and aids in providing relief to them. Therefore, I would request your good self and submit the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, where healthcare is affordable for all, and seek the establishment of an AIMS facility at Kinnalur, Kozhikode, Kerala. Thank you, sir. धन्यवाद श्रीमती पीटा उषा जी. Please, John Britas ji, please take your place. माननीय श्री सतनाम सिंह संधू जी, demand to preserve Majha, Malawi, Doabi and Puddi dialects of Punjab. थैंक यू सो मच सर. सर, मेरा कंसर्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को लेकर है. भारत का डाइवर्स कल्चर इसकी बहुत बड़ी ताकत है, और इस भारत में, हमारे देश में सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, और 19,000 से भी ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं, और सैकड़ों बचाव हैं. अगर मैं पंजाब का जिक्र करूं तो पंजाब में 28 डायलेक्ट्स थे, 28 बोलियां बोली जाती थी पंजाबी में, जो कि अब 4 पे सिमट के रह गई हैं. पंजाब के जो माझा, मालवा, दुआबा और पुआध रीजन हैं, वो इन बोलियों में बंटे हुए थे. इन बोलियों में एक अपनी मिठास थी, एक अपना लहजा था और एक अपनापन था. लेकिन समय के साथ
हर भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है, हिंदी का भी हुआ है और ऐसे ही पंजाबी का भी हुआ है। हमारे लिखने पढ़ने की भाषा पंजाबी स्टैंडर्डाइज हो गई है और उसके चलते हमारे जो डायलेक्ट्स हैं, हमारी जो लोकल बोलियां हैं, वो अलोप हो रही हैं, वो लुप्त हो रही हैं। बच्चा जब जन्म लेता है अपनी माँ बोली सीखता है, अपनी मातृभाषा सीखता है, वो डायलेक्ट में सीखता है, लेकिन जब स्कूल में जाता है तो वहाँ जाकर उसको एक अपनी स्टैंडर्ड भाषा में पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने और ख़ास करके हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस डाइवर्स कल्चर की अहमियत को बहुत अच्छे से पहचाना है और इसीलिए नई एजुकेशन पॉलिसी में क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाने का प्रोविज़न किया है। और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी अगर पंजाबी की बात करूँ तो जितनी देर एक टीचर उसके डायलेक्ट में बच्चे के उसकी बोली में नहीं समझाएगा, बच्चे को जल्दी समझ नहीं आएगा। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दुनिया में हो चुके हैं, सिंगापुर में भी हुआ है, फिलीपींस में भी हुआ है कि मातृभाषा में लोकल डायलेक्ट में जब टीचर बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, खास करके प्राइमरी एजुकेशन में, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ है कि मेंटली रिटायर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए जब लोकल डायलेक्ट्स में टीचर ने प्रयत्न किया तो उसके परिणाम बाकियों से बेहतर थे। तो मैं समझता हूँ कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी ने ये रास्ता खोल दिया है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं और मुझे खुशी है कि स्टेम एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पहली बार देश में होगा और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि वो लोकल भाषा में पढ़ाई जाएगी। इसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। लेकिन मेरे कुछ सुझाव हैं कि ये पढ़ाने के दौरान लोकल डायलेक्ट को प्रमोट करने के लिए प्रोविज़न किया जाए और इसके लिए जो हमारे 19,500 राष्ट्रीय लेवल पे बोलियां हैं उनकी एक डिक्शनरी बनाई जाए। जो लिटरेचर है हमारा लोकल भाषाओं में। धन्यवाद, समय खत्म हो गया माननीय सत्ता से। धन्यवाद। Honorable Shri R. Girirajan need to take necessary steps to reduce the T&D losses and provide adequate financial support to develop a state-of-art power infrastructure in Tamil Nadu with a reduced rate of interest. Thank you, Deputy Chairman. The peak electricity demand in Tamil Nadu is expected to touch 22,000 megawatts during summer, and steps are being taken by the government of Tamil Nadu to ensure uninterrupted supply. Sir, recently during Cyclone Bengal, a total of 12,265 electricity poles were damaged in the state, but they were replaced in record time. Ahead of summer, the TNEB, Tamil Nadu Electricity Board, and the TANGEDCO officials have identified overloading issues in 6,536 transformers across the state. Sir, of which 5,407 have already been fixed. 48 new substations have been installed to strengthen the power grid, along with the proposal of commission of 20 power substations throughout the state of Tamil Nadu to provide uninterrupted power supply. Sir, according to the Load Generation Balance Report, LGBER of Southern Regional Power Committee, SRPC, the Tamil Nadu demand in April is expected to be 20,600 megawatt against the availability of 21,488 megawatts, resulting in a surplus of 985 megawatts. Sir, but in the evening, the requirement would be 20,700 megawatt as against the availability of 16,003 megawatt, leading to a deficit of 4,697 megawatt. Economic Survey of India 2021, India's T&D, transmission and distribution losses have been over 20% of generation, which is more than twice the world average. If only the government reduces the T&D losses, the power supply will see the brighter side. Tamil Nadu being one of the top industrial states in the country, and its power supply and demand too is high, and the per capita consumption too is on higher side. Therefore, I urge the Union government to take all necessary steps to reduce the T&D losses and provide adequate financial support to develop the state-of-art power infrastructure in Tamil Nadu with a reduced rate of interest. Thank you, sir.
Thank you, Mani R. Rajan ji. Mani Sri Niranjan VC demand to introduce more national level schemes for the comprehensive development of tribal community in Odisha. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on the important matter for the development of tribal community of Odisha. Sir, the Pradhan Mantri Adi Adarsha Gram Yojana, initiated by the central government, aims to uplift tribal villages by enhancing their infrastructure and providing essential services. The evident challenges of weak service delivery in tribal inhabited areas necessitate prompt attention. While the PMAAGY scheme contributes to the distribution of basic services in tribal villages, concern arises over significant decrease of 63% in fund allocation to Odisha from the financial year 22-23 and 23-24 onwards. Moreover, Odisha's fund allocation is comprehensively lower than the other states. The Odisha government, led by Honorable ex-Chief Minister Sri Naveen Pandeyji, had implemented various schemes such as the Odisha particularly vulnerable tribal group empowerment and livelihood improvements program, the Special Development Council, and tribal sub-plan to uplift the tribal community. However, there remained a pressing need for increased central intervention and assistance in their endeavor. To address this issue, the Ministry of Tribal Affairs, Government of India, could consider allocating more funds to Odisha under the Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana, Special Development Council, and tribal sub-plans. Additionally, launching special programs and schemes in collaboration with NGOs, civil society organizations, and local tribal leaders can enhance the effective implementation and monitoring of development programs, fostering community participation. Therefore, through you, sir, I respectfully urge the government to swiftly undertake these measures, facilitating the comprehensive development of the tribal community of Odisha and ensuring equitable progress in line with national objectives. Thank you, sir. धन्यवाद माननीय निरंजन विशी जी. माननीय श्री रीता प्रताप बनर्जी, demand for changing the name of the West Bengal to Bangla. Thank you, sir. Sir, it's a long-pending demand of the state of West Bengal to change the name of the state to Bangla. On July 26, 2018, the State Assembly, under the leadership of Mamata Banerjee, unanimously passed a resolution to change the name of our state from West Bengal to Bangla. All sorts of clarifications were given in this regard. Please. Honorable Chief Minister of Bengal, Srimati Mamata Banerjee, has time and again requested to fast-track the approval. Mamata Banerjee, in her letter to the Honorable Prime Minister, has categorically stated, quote, "This rechristening will be in consonance with the history, culture and identity of our state and will reflect the aspirations of our people," unquote. After independence, there has been many changes in the names of many states and cities. The name West Bengal came into existence when the province of Bengal was partitioned in 1947. The eastern part came to be known as East Pakistan and the western part was named as West Bengal. Today, there is no East Pakistan. Please. After the Bangladesh Liberation War, it became Bangladesh. Bengal has always been the target of autocrats pre and post independence, as Bengal refuses to bow down. As Bengal became the nerve center of anti-British activities, the decision to partition of Bengal was taken by Lord Curzon in 1905. Vibrant and spontaneous protest erupted throughout Bengal, led by Rabindranath Tagore himself. The Polymath penned a number of patriotic songs, which became the war cry of the anti-partition struggle. Amar Sonar Bangla, Ami Tomaye Bhalobashi, Chirodin Tomar Akash, Tomar Batash, Amar Prane Bajaye Bashi, Amar Sonar Bangla, Ami Tomaye Bhalobashi. Banglar Mati, Banglar জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, হে ভগবান. Now, sir, I will be requesting you, sir, this is a very interesting thing that the name East Bengal is never there, nowhere there. It is only, the name East Bengal appears only through a club, a 105-year-old club. That club represents the never say die attitude of the Bangals who migrated, who were forced to migrate from eastern part of Bengal. I belong to a refugee family. My father came here in 1947 when he was in class 5, and I, sir, I always
always, as a refugee, I wear the badge of proud badge of honor. This is the culture of anyhow they will be doing it, sir. I will urge upon you. The name East Bengal is nowhere there. Our state's name West Bengal needs to be changed. The mandate of the people of Bengal needs to be honored. It is incumbent upon the government to respect the will of the 10 crore people in the state and accept the proposal of Mamata Banerjee's government and change the name of West Bengal to Bangla. Thank you, sir. Joy Bangla. माननीय श्री जगेश demand to increase the funding for innovation work of groups of monuments at Hampi. Shri Jagesh not present. माननीय श्री Harish Viran demand to provide funds for the research and development of low-cost gene therapy for spinal muscular atrophy. Not present. माननीय Harish Viran ji not present. माननीय श्री अशोक राव शंकर राव चौहान concern over unlawful detention of Indian immigrants in foreign countries. Respected Chairman Sir, to fulfill the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi, self-employment and small and medium startup business are growing fast in my parliamentary constituency Nanded. As more and more people are getting engaged in self-businesses and startups, they have to often visit foreign countries, particularly to the Middle East countries of Iran, Qatar, UAE and Saudi Arabia. Sir, I want to draw your attention towards the fact that from the last few years, particularly during the last 3 years, people visiting the above said countries for business purposes are being detained unlawfully in these countries without providing any valid reasons. And even diplomatic protocols are violated and information regarding the detention of these people are not being provided to our embassies situated in these countries. The families of wrongly detained persons have to go through a very tough time in India, always being in fear about the fate of their dear ones in these countries. So through you, I request the government to step forward for these Indians and take appropriate action to free them who are detained without any rhyme and reason. One such missing person is from a constituency, Yogesh Panchar. I request upon the Honorable Minister to look into the matter as per law. Thank you. धन्यवाद माननीय अशोक राव जी. सुश्री सुष्मिता देव जी, need to enhance the potential of national waterways. Thank you, sir, for the opportunity. Sir, I come from a state which is well known for its mighty rivers. The state of Assam takes pride in the fact that we have the Brahmaputra and the Barak River. Whereas we often see that these rivers are associated with floods in Assam, what we fail to appreciate is, sir, that riverways is actually one of the cheapest way for movement of goods. If we look at history of Assam, where we share a huge border with Bangladesh, Myanmar, etc., our rivers are an asset through which we should be facilitating movement of goods. I feel lucky that Sarvananda Sonowal ji is today present in Parliament. And in the 16th Lok Sabha, when I represented the constituency of Silchar, the Barak River was declared a national waterway, sir. And we were all very hopeful and aspirational that once this waterway is properly made operational with proper infrastructure, a very remote and backward area like Barak Valley will be able to enhance its economy due to movements of goods through the Barak River. Unfortunately, sir, infrastructure till today remains incomplete. The dredging of River Barak has been abandoned as a project, due to which the people of Barak Valley are almost isolated in the state of Assam. Trains become dysfunctional due to floods, due to landslides, because we are surrounded by Dima Hasao, we are surrounded by Karbi Along. Airways is beyond the affordability of a common man and small traders. In these circumstances, sir, I urge upon the government of India that please facilitate the dredging of Barak River, please facilitate the movement of goods through
through our riverways. We need ports to be made. We need proper customs infrastructure to be there so that this otherwise isolated area of Assam can grow faster, meet the aspirations of the youth, boost our economy, connect us better for international trade, and we can come out. We can come out from the backwardness that we've been facing for decades. I thank the government of India for starting the Brahmaputra board, which manages the Brahmaputra river. But till today, for the Barak river of Assam, we do not have a board that manages that river properly. So these are my demands in the greater interest of the people of Assam. Thank you, sir. Saket Gokhale need to ensure optimization of blending petrol with ethanol. Thank you so much, sir. Sir, this is a very important issue that I wish to raise today because the government recently has announced that by next year, they're going to ensure 100% blending of ethanol with petrol. So they're going to get 20% of ethanol into a liter of petrol. The idea behind this, the government says, is to ensure that we meet our climate goals and we meet our emission targets. So there is very simple mathematics, which has not been yet shared with the people of India, that I wish to place here. So 200 ml of ethanol, 20%. So the market rate has been increased about 5 days ago. So the new market rate of, with the new market rate, it's 57.97 rupees for a liter of ethanol. So 20% is 200 ml. So that's 11.5 rupees. So petrol price today is about 103 rupees. So if I take out 20% of that petrol, that will come to about 20 rupees. Now I take away that 20 rupees worth of petrol and I substitute it with 11 rupees worth of ethanol. The price goes down by 9 rupees, sir. The question here, sir, is that you're making it mandatory to blend ethanol, 20% ethanol with petrol. Why is the saving from that not being passed to the average consumer? Yeah. So today, people are tired of rising fuel prices. We've heard everything. India is buying cheap oil from Russia, below the $60 a barrel cap. But in the last since the Ukraine war started, so since 2022, no relief has been given to consumers at the fuel pumps. Petrol prices, diesel prices are still sky high. So the question is, now you're putting in ethanol. Thank you. Question or Gokhale ji. Thank you. Question number 16, Srimati Mahua Majhi. Question number 16.